Good afternoon, everyone. So रजनीकांत ने मेरे को जो टॉपिक दिया, this is related to long term compounding. को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होता क्यों है, कैसे, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ड्राइव इट. To be honest, I am far more bottom-up oriented in portfolio construction and stock picking than top-down. So long-term compounding oriented businesses is pretty much what my portfolio is composed of at Consistent Compounders. So let me first set the context for long-term compounding a little bit. Okay, before that, quick disclaimer. If there are any stock names that we take in this presentation, they might be part of Marcellus's portfolios, their clients, our families, etc. So to set the context first, if you've got a stock portfolio where average holding periods are long, as in the churn is relatively limited in a year, let's say, take for simple case, 20% churn, more or less, which Consistent Compounders, our portfolio has had in the last 6-7 years. 20% churn effectively means 5 years average holding period, right? For some stocks, it might have been longer, for some a little less. On a 5, 6, 7 year holding period, the contribution of fundamentals to the share price performance is far greater than typically the contribution you would see over a 1 or 2 year period, right? Over a 1 or 2 year period, non-fundamental factors might contribute far more to the share price. Over a 5, 7, 10 year period, it's the fundamental factors. So if you want to compound over the longer term at a share price level, it has to largely come from compounding over the longer term from a fundamental perspective, right? What are fundamentals? Well, let me explain it using this simple cycle. If you look at, let's say, returns on capital employed are profits जो आप कमाते हैं capital employed के ऊपर. So एक simple सा example देता हूँ. हम सब ने किराने की दुकान को काफ़ी बार विजिट किया है, देखा है. इट्स अ बिजनेस. किराने की दुकान इज ऑल्सो अ बिजनेस. वी ऑल अंडरस्टैंड द किराने की दुकान का बिजनेस, राइट? सो किराने की दुकान का कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? दो चीज़ें हैं. एक रियल एस्टेट कॉस्ट है, फर्नीचर फिक्सचर है, दिस इज द फिक्स्ड एसेट. दूसरी चीज़ है एक इन्वेंट्री में पैसा अटका हुआ है. आपने सेल कर दिए, लेकिन क्लाइंट ने आपको मंथ में एक बारी या हफ्ते में एक बारी पैसा देना है, तो आपका वहाँ पे भी पैसा अटका हुआ है, एटसेट्रा, राइट? सो देयर इज अ वर्किंग कैपिटल पार्ट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, एटसेट्रा, एंड देयर इज अ फिक्स्ड एसेट पार्ट. आपका जो लैंड है या फिर प्रॉपर्टी है, फर्नीचर, फिक्सचर, एटसेट्रा. ये एक बिजनेस का एज एन एग्जाम्पल कैपिटल एम्प्लॉयड है. व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू यूज दिस as a measure when you look at profits? So return on capital employed means profit आप कितना कमा रहे हैं साल में divided by capital आपका कितना लगा हुआ है धंधे में. ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए क्योंकि सेम कैपिटल आप रजनीकांत को देके स्टॉक मार्केट में भी लगवा सकते थे. तो रजनीकांत क्या रिटर्न उस पर निकालते? दैट वॉज योर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन. टिपिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेट्स से, for all of business managers in India typically tends to be 12 to 14%, क्योंकि alternative avenues से 12-14% का रिटर्न एक प्रोमोटर निकाल सकता है. तो अगर एक बिजनेस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल स्टॉक, अगर एक किराने की दुकान प्रॉफिट इन अ ईयर डिवाइडेड बाय पूरा जो कैपिटल उसका लगा है उस साल में, ये रेशो को 12-14% के ऊपर रख सकता है, तो बिजनेस चलाने का कोई फ़ायदा है नहीं. तो उसे ऑनेस्टली स्पीकिंग बिजनेस बंद करके उस पैसे को कहीं और बेटर यूज पे लगा देना चाहिए, राइट? सो दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टॉप राइट. बट दिस इज प्रॉफिट जनरेटेड इन अ सिंगल ईयर. फॉर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ऑफ फंडामेंटल्स, फॉर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ऑफ अर्निंग्स, आपको क्या चाहिए? ये प्रॉफिट ग्रो करे, राइट? ये प्रॉफिट ग्रो कैसे करता है? जो आपका एक साल का प्रॉफिट निकला, लेट से किराने की दुकान 1 करोड़ का रेवेन्यू करती है, उस पर मोटा मोटी पकड़ लीजिए 5% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन आता होगा, रफ नंबर.
तो 5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट बना। अब आपको ये 5 लाख रुपए को ग्रो करना है, तभी आपके बिजनेस का फंडामेंटल ग्रो करेगा, तभी इस बिजनेस में अगर शेयर प्राइस लिस्टेड है और इन्वेस्टर्स एक्सटर्नल हैं तो इन इन्वेस्टर्स को शेयर प्राइस के थ्रू पैसा कमाने का मौका है। नाउ द वे टू ग्रो इट इज, एक तो ऑब्वियस है कि आप 1 करोड़ पे 5 लाख कमा रहे थे, अगले साल आप 1 करोड़ पे 6 लाख कमाएं। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मार्जिन एक्सपेंशन थोड़ा रिलेटिवली मुश्किल रहता है ओवर अ लॉन्गर टर्म सस्टेनेबली। बट द बिगर वे टू ग्रो इट इज, आपने जो 5 लाख 1 साल में कमाया, अगले साल आप उसको वापस धंधे में लगा के धंधे का कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 1 करोड़ 5 लाख कर दें, राइट, सो द कैपिटल एम्प्लॉयड गोज अप बाय 5%, एंड देन उस 1.05 करोड़ पे सेम प्रॉफिट मार्जिन के साथ आप लेट से 5% हायर देन लास्ट ईयर्स 5 लाख आप प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। सो 5,25,000 आपका प्रॉफिट हो जाता है। नाउ दिस इज अ प्रॉफिट ग्रोथ, यू कीप कंपाउंडिंग दिस, डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट मार्जिन्स, डिफरेंट रेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट द पॉइंट इज ऑफ दिस साइकिल इज, आप कैपिटल लगा रहे हैं धंधे में, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर रहे हैं, री इन्वेस्टेड प्रॉफिट पे फिर से हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है, ये साइकिल चलाते रहने का है, राइट। सो बिजनेसेस दैट यू पिक अप, दैट वी पिक अप फ्रॉम लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पर्सपेक्टिव, ये बिजनेसेस में ये साइकिल का होना जरूरी है। अगर ये साइकिल हमारे को कन्विक्शन नहीं बैठ रहा है एज फंड मैनेजर्स, एज इन्वेस्टर्स, अगर कन्विक्शन नहीं बैठ रहा है कि क्यों प्रॉफिट आता रहेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल सस्टेन रहेगी, री इन्वेस्ट होता रहेगा, प्रोमोटर को घर ले जाने की जल्दी नहीं है, धंधे में लगाता रहेगा, एंड री इन्वेस्टेड कैपिटल पे अगेन रिटर्न ऑन कैपिटल हाई आता रहेगा, एंड हेंस प्रॉफिट की ग्रोथ चलती रहेगी। अगर ये साइकिल आपको नहीं दिख रहा है तो फिर वो कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग ऑफ अर्निंग्स नहीं होएगा, राइट। सो दिस इज अ सिंपल ब्रॉड फ्रेमवर्क। हाउ डज द फ्रेमवर्क वर्क? व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? अरे हाँ, ओके, राइट। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का कह लीजिए एक मेन ड्राइवर इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब इस किराने की दुकान के बाजू में एक और किराने की दुकान होएगी, अगर कस्टमर को वो खींच लेगा नेक्स्ट ईयर तो आपका 1 करोड़ पे 5 लाख नहीं बनेगा, राइट, मोर और लेस। सो दैट्स द ड्राइवर ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। द ड्राइवर ऑफ री इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल एलोकेशन, बिकॉज ये किराने की दुकान का ओनर एक्स्ट्रा 5 लाख रुपया री इन्वेस्ट कहाँ पे करेगा? ही कैन आइदर ओपन अनदर स्टोर, इसी स्टोर को साइज बड़ा कर दीजिए या और एक दुकान खोल लीजिए, और ही कैन ऐड मोर मर्चेंडाइज विद इन द सेम स्टोर, राइट। पहले सिर्फ शैम्पू और साबुन बेचता था, पैकेज फूड भी बेचने लग गया, एटसेट्रा। और देयर कैन बी सम अदर वे ही कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस कंप्लीटली, राइट। सो यू एज इन्वेस्टर्स नीड टू बिल्ड कन्विक्शन ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ आज का बिजनेस एंड कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन ऑफ री इन्वेस्टमेंट। इन दो बड़े मुद्दों पे अगर आपका कन्विक्शन बन गया तो नीचे प्रॉफिट कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म के लिए आ जाएगा। अगर इन दो बड़े मुद्दों पे कन्विक्शन नहीं बना तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कंपाउंडिंग स्पेक्युलेटिव है, राइट। वो फिर किस्मत की बात है, आया आया, नहीं आया नहीं आया, it will be unexpected factors that drove it, right? So this is broadly speaking the cycle that we seek in every business. Now a little bit more context on this, and then maybe I'll give you an example of a stock from our portfolio. What builds competitive advantages from a long term perspective in India? तो हमारा जो मानना है, किसी भी सेक्टर में अगर कोई चैलेंजिंग पेन पॉइंट नहीं है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना मुश्किल है, बिकॉज इट इज लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबडी। द मोर यूनिफॉर्म द इंडस्ट्री इज, द मोर डिफिकल्ट इट इज टू बिल्ड अ कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज बनाने के लिए कोई पेन पॉइंट जरूरी है। हर बिजनेस के पास ऑप्शन है कि वो उस पेन पॉइंट को पकड़ के सॉल्व करने की कोशिश करे, या जैसे सारी दुनिया उस पेन पॉइंट को बर्दाश्त कर रही है, ये वाला बिजनेस भी सिर्फ बर्दाश्त करे बिना सॉल्व किए,
राइट? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनता है जब एक प्रमोटर बोलता है इस पेन पॉइंट को पकड़ो जो मीनिंगफुल है फॉर द कस्टमर, रॉ मटेरियल वेंडर और somebody else in the ecosystem. ऐसा पेन पॉइंट पकड़ो जिसका सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है फॉर somebody in the ecosystem, राइट? उस पेन पॉइंट को सिंपल वे में एड्रेस मत करो, क्योंकि सिंपल वे में तो सारी दुनिया एड्रेस करती होगी. सिंपल वे में मत एड्रेस करो, उस पेन पॉइंट को इस तरह से एड्रेस करो विद अ सॉल्यूशन दैट एड्स वैल्यू बट कांट बी रेप्लिकेटेड, राइट? एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपटीशन विल ऑलवेज कॉपी द सॉल्यूशन. आपको एक डिफरेंट पेन पॉइंट पकड़ना पड़ेगा या इसी पेन पॉइंट को इवॉल्व कराना पड़ेगा और अपना सॉल्यूशन इवॉल्व कराना पड़ेगा, राइट? दैट्स अ सिंपल, आई वुड से, फ्रेमवर्क दैट वी हैव सीन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे कोई कंपनी बनाती है. सो अगर मेरे को एज अ फंड मैनेजर किसी कंपनी में ये नहीं समझ आ रहा है कि ये कौन से पेन पॉइंट को एड्रेस कर रही है, क्यों इसका सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है फॉर अ स्टेक होल्डर, और क्यों वो सॉल्यूशन कंपटीशन रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, राइट? इन अ वे, टू डायमेंशंस, पेन पॉइंट एंड द सॉल्यूशन, दे बोथ शुड एग्जिस्ट, दे शुड बी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, दे शुड ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू समबडी इन द सिस्टम. अगर ये समझ में आ रहा है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे कन्विक्शन बना. अगर कन्विक्शन बनता है तो रिटर्न ऑन कैपिटल आता रहेगा, इस पे कन्विक्शन एटलीस्ट बन गया. ग्रोथ अर्निंग्स की आएगी नहीं, दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल एलोकेशन, बट रिटर्न ऑन कैपिटल आता रहेगा, प्रॉफिट घुसेगा नहीं. डाउनसाइड प्रोटेक्शन है, कंपटीशन आएगा तो इनइफेक्टिव होएगा, बिकॉज ये कंपनी पेन पॉइंट को सॉल्व करती रहेगी, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर कंपटीशन टू रेप्लिकेट, राइट? नाउ दूसरा फैक्टर वाज कैपिटल एलोकेशन, ग्रोथ, रीइन्वेस्टमेंट. व्हाट आर यू सीकिंग एज इन्वेस्टर्स, एज फंड मैनेजर्स? जब हम किसी भी कंपनी का कैपिटल एलोकेशन अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं, तो इन अ वे व्हाट आर वी सीकिंग वाया कैपिटल एलोकेशन? वी आर सीकिंग लार्जली दीज 4 pieces. पहली बात, बिजनेस को स्केलेबिलिटी मिलनी चाहिए. कैपिटल एलोकेशन शुड हेल्प द किराने की शॉप become a chain of retail kirana stores 10 years down the line, or become a much larger modern retail kirana shop 10 years down the line, or become a conglomerate of several businesses 10 years down the line. Scale zaruri hai for profit growth to come. Capital allocation has to feed into that scalability. The second piece is continuity. What you need is कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस वन ऑफ नहीं होना चाहिए. आज एक प्रमोटर ने, एक मैनेजमेंट टीम, इससे पहले की प्रेजेंटेशंस में जिनेश ने, पंकज ने जो मैनेजमेंट टीम पे फोकस डाला, इफेक्टिवली मैनेजमेंट टीम वैल्यू ऐड क्या करती है. मैनेजमेंट टीम डिसीजन ले रही है कहाँ पे कैपिटल एलोकेट करें, किस रेट पे एलोकेट करें, कब एलोकेट करें. ये डिसीजंस में कॉन्टिन्यूटी ज़रूरी है. आज मैनेजमेंट ने अच्छे डिसीजन ले लिए, 3 साल बाद वो छुट्टी पे चले गए 5 साल के लिए, आपकी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बैठ जाएगी द मोमेंट मैनेजमेंट टीम गोज फॉर अ हॉलीडे. सो यू नीड टू सी कॉन्टिन्यूटी इन डिसीजन मेकिंग टू कीप स्केलिंग द बिजनेस अप. द थर्ड पीस यू नीड टू फिक्स वाया कैपिटल एलोकेशन इज, कैपिटल एलोकेशन उन जगहों पे हो रही होनी चाहिए जहां पे कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स, डिसरप्शन का रिस्क कंटेन होता जाए, राइट? बिकॉज नेचुरली अगर आपका रिटर्न ऑन कैपिटल 30-40% है इन अ बिजनेस, competition guaranteed will get attracted towards it. In a free market, in a large market, आप बैठ ही नहीं सकते with a 30-40% return on capital employed without competition taking a notice of that. तो अगर आप capital allocate कर रहे हैं to keep deepening your competitive advantages, keep evolving your competitive advantages, then your competitive threats get taken care of. And the last piece is disruption. I think जिनेश ने बोला कि companies should self-disrupt. If the capital allocation approach isn't oriented towards giving disruption to competition, then we should also be a little worried. So ये 4 चीजें, not all 4 all the time, but these are the 4 things that capital allocation tries to solve for. In a different way,
what we are seeking is companies that deepen existing strengths, companies that add new growth drivers, companies that might say, look, consolidation is the way to go for. So we'll do M&A if needed. So there are certain industries where without M&A you can't scale geographies. Let's say diagnostics is an example. So companies that keep consolidating if that is the need of the hour. And you're looking for companies that carry out disruptions in a manner which has succession planning around it. So decision makers should have continuity to them. कल को कोई retire हो सकता है, resign कर सकता है, death हो सकती है in the key managerial people. You need succession planning to be visible to you as investors. कि the next guy should not be a disaster. Well, when the next guy comes, you'll have to reassess whether he's a disaster or not. And finally, institution building also helps, particularly with the continuity of decision making, right? This is largely what you're looking at in terms of capital allocation. Now, there are two distinct types of capital allocation approaches, or that cycle which I talked about: return on capital, reinvestment rate, profit growth. There are two distinct types of these cycles which can give the same outcome, right? So what is the same outcome I'm talking about? Let's say EPS CAGR or profit CAGR आप 20% expect कर रहे हैं एक business से. There are two ways in which that business can give you 20% EPS CAGR. एक तो तरीका है 20% return on capital employed with 100% reinvestment rate, which means let's say 100 रुपए पे 20 रुपए का आपका profit आया, वो 20 रुपए आपने 100% reinvest कर दिया. So the 100 became 120 next year. On that 120, then you had another 20% return on capital employed, which means 24 rupees. So पिछले साल आपका 20 रुपए का profit था, इस साल 24 रुपए का profit आया, right? Because 100 पे 20% gives you 20, 120 पे 20% gives you 24. तो अगर आप 100% of your profits reinvest कर देते हैं और उस पे 20% दोबारा से निकालते हैं, you will get a 20% EPS growth, right? That's the panel on the right. For reinvesting 100% of your profits, you might need newer businesses, peripheral businesses, newer geographies, etc. Same business में there might not be enough scope to reinvest 20% of the profit. So that's the enterprising compounders example on the right. Why do I call them enterprising compounders? Because the entrepreneurial quotient in reinvesting 100% of the capital back into the business needs to be high. आपके existing core business में इतनी क्षमता शायद ना हो कि पूरा का पूरा 100% profit reinvestment वो ले ले and फिर again 20% की उस पे return on capital निकाल दे, right? Whereas there's a second type of capital allocator you can hunt down, which is 40% return on capital but 50% reinvestment rate, right? So 100 रुपए का आपका capital employed था, your reinvestment was half, but half of a bigger chunk of profits, right? So profit was 40%, 100 रुपए पे आपने 40 रुपया निकाला, 40 रुपए का आपने 20 रुपया वापस धंधे में लगाया, capital employed grew by 20%, 120 रुपए पे 40% आपने निकाला, which is again 56, right? So this is how, not 56, sorry, 48. So this is how you will grow your profit by the same run rate of 20%, right? So दो अलग-अलग engine है. Why is this important? I'll give you some broad context. So pre-COVID, a large part of high-quality capital allocators used to reinvest into their own businesses all the time. Why? Because competitive advantages were so difficult to catch up on for competition that if they return half of their profits as dividends and reinvest only in their core business, competition won't come too close, right?
This is particularly prior to the infrastructure build out of digital and physical across the country. एक मामा अर्थ हो या जोमेटो हो या कोई और नया डिसरप्टर हो, 2015-16 के पहले बहुत लंबा टाइम लगता था न्यू प्लेयर को स्केल अप करने में, राइट? In that era where disruptions were less frequent, where competition was taking a long time to scale up, where incumbents had a lot of time to play defense when attacked by competitive threats. In that era, आपके कोर बिजनेस में 40% ROC आ रहा है, आधा आप रिटर्न कर रहे हैं, आधा आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20% प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, was the most common way of growing profits, right? Some of those companies might still exist, but through COVID, India has become far more competitive. Not because of COVID necessarily, but pre-COVID to post-COVID, the digital infra, the physical infra, the adoption of digital infra due to COVID or through COVID has massively ramped up. As a result, today, the highest quality capital allocators who have identified this transition are also those जो 100 रुपए के कोर पे 40 रुपए का प्रॉफिट निकालते थे, बट उनके काफी सारे नॉन कोर बिजनेसेस भी फंड हो गए हैं जिनका 10% रिटर्न ऑन कैपिटल होगा, बिकॉज दे हैव बीन रिसेंटली सीडेड. ब्लेंडेड एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल दे आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज कोर बिजनेस में 40 होएगा, न्यू बिजनेस में 10 होएगा. लेट्स से ब्लेंडेड एवरेज 20% रिटर्न ऑन कैपिटल है, but the newly seeded 10% over a period of time goes to 30-40 is the direction in which the promoter takes, and every time profit gets reinvested, some of it goes towards more newly seeded businesses. So that becomes the enterprising compounder example that you will find even amongst already large matured companies in this country today, right? So for instance, if you take the global counterparts as examples, Amazon is a mega size company, but uska reinvestment rate near 100% hai, right? Because it keeps seeding newer areas of growth once every 3, 4, 5 years in a massive way, right? So that is where India has also migrated towards. Just be very conscious of what kind of a 20% earnings growth you're looking for. In our portfolio, there's a far greater allocation of enterprising compounders today than it used to previously, right? These then become the risks and rewards of investing in these two different types of companies. If you go for enterprising compounders, the rewards are new growth drivers. They create a hedge. You're not exposed to a single business. New growth drivers might actually give you a higher growth rate initially, but the risks are capital misallocation is far easier if you go outside of your core, right? The risk rewards of matured capital allocators, जो आधा पैसा डिविडेंड में लेट्स से बांट रहे हैं शेयर होल्डर्स को, बाकी आधा कोर में लगा रहे हैं. द बेनिफिट इज दे आर फाइटिंग वेरी फेमिलियर बैटल्स. दे आर फाइटिंग इन द कोर विद द कॉम्पिटिटर्स दे हैव ऑलरेडी फॉट. दे आर ऑलरेडी प्रीटी स्ट्रांग. दे ओनली हैव टू प्ले डिफेंस. They don't have to play offense. They don't have to disrupt somebody else really. But the disadvantage is you might be sitting on a complacent company because competition is catching up and this company is not willing to evolve into peripheral areas to deepen even the core and build non-core businesses, right? So very different types of capital allocators. Both can give you long-term compounding. Both can give you 20% EPS CAGR if your call on their reinvestment rates and ROCs, the combination, it works out, right? Now let me take an example. So this is an example of one of our portfolio companies in consistent compounders called Narayana Health, Narayana Hrudayalaya. It's one of the larger allocations here in consistent compounders. What is the industry structure like? What is the pain point? What is the solution? What is the moat? Where is the capital getting reallocated?
and what kind of a growth does a business like this generate, right? It's in a very interesting industry, particularly because pre-COVID, none of the hospital chains in India really used to make any money, right? Sari hospital businesses loss-making hua karte the pre-COVID. Suddenly, you've got many hospital businesses in the listed domain with healthy returns on capital employed, healthy growth rates, etc. Right? Obviously, one thing that has happened for the entire industry as a whole is health has become a far more aware topic. Health insurance adoption has been consistently increasing. Health insurance then means you've got quaternary and tertiary care, which is high-end treatments, complex treatments, being offered by hospitals and customers willing to go for those treatments because they have a health insurance, right? पहले primary care, secondary care, nursing home, छोटा सा hospital, उतने में ही काम चलाते थे क्योंकि capacity नहीं थी out of pocket, expensive treatments के लिए pay करने की. And over a period of time, medical science has also evolved, treatments have become complex, doctors don't want to just run an OPD on the high street, they want to be associated with robotic surgery teams and medical science of the future, so on and so forth. So from both supply side and demand side, there has been an influx into this industry. कुछ hospitals ने एक तरह का unit economics बनाया है, कुछ ने दूसरी तरह का, कुछ ने तीसरी तरह का. There are very different unit economics that exist in this industry. Worth understanding that to decide long-term compounding. कहाँ से ज़्यादा easily आ सकती है? There is no guarantee. Your calls can always go wrong, but probability of getting long-term compounding is higher in which stocks, right? So सबसे पहले बात करते हैं इस industry का pain point क्या है. So problem शुरू कहाँ से होती है एक hospital के लिए? Remember we are talking about hospitals which offer complex surgeries largely. ये सिर्फ orthopedics का एक हड्डी तोड़ के जोड़ते नहीं है. This is even within orthopedics or elsewhere, very complex set of surgeries that these hospitals do across oncology, cardiology, so on and so forth. The pain point starts with the fact that many of the corporate hospital chains, they outsource customer acquisition, right? So customer को लाने का जो तरीका है, बहुत सारे hospitals outsource करते हैं दो entities को. अगर तो इंडिया का कस्टमर है तो डॉक्टर को बोलते हैं आप जाके अपना फ्रेंचाइज बनाइए, आप मार्केट कीजिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, आप रिलेशनशिप बनाइए दूसरे डॉक्टर्स के साथ जो ओपीडी फुटफॉल्स को रेफ़र करेंगे हमारे हॉस्पिटल में, आप जाके हमारी मार्केटिंग टीम के साथ टाइम स्पेंड कीजिए टू बिल्ड योर ओन फ्रेंचाइज. व्हेन द पेशेंट कम्स इन योर नेम, ही ट्रस्ट्स यू. You offer the treatment, follow-up is also with you, post-operative entire journey is with you, and you build your franchise, right? Customer acquisition in a way, hospitals ने बोला, डॉक्टर करके लाएगा हमारे लिए, डॉक्टर अपना छोटा-छोटा business बना के रखेगा, that's how the whole hospital will run a wider business. यहाँ से problem शुरू होता है, क्यों? क्योंकि जब hospital ये वाली approach करता है, तो स्टार डॉक्टर क्रिएशन हो जाता है, राइट? स्टार डॉक्टर मतलब जिस डॉक्टर ने फ्रेंचाइज बना लिया अपना, उसको रिटेन करने के लिए हॉस्पिटल को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. उस डॉक्टर को रिटेन करने के लिए ज़्यादा पैसा दिया तो वो पैसा आएगा कहाँ से? पेशेंट से. तो पेशेंट से मल्टीपल सर्जरीज कराइए, प्राइस आसमान को छुआ दीजिए, राइट? द सेकेंड टाइप ऑफ पेशेंट इज आउटसाइड ऑफ इंडिया. वो भी आउटसोर्स्ड है. एजेंट होते हैं जो कीनिया से, अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से पकड़ के पेशेंट लाके हॉस्पिटल के यहाँ रख देंगे, राइट? दिस इज पर्टिकुलरली very prevalent, both these concepts very prevalent with North Indian hospital chains, right? 30% of revenue of a typical North Indian hospital comes from international patients. International are these medical tourism वाले sourced via agents. Again, क्योंकि आप एजेंट को पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा भरेगा कौन? पेशेंट, राइट? सो आप पेशेंट को ज़्यादा चार्ज करते हैं, इंटरनेशनल पेशेंट को. ये दो रीज़न से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस मॉडल चलाते हैं, डॉक्टर के सर पे तलवार लटकती है, लिटरली सम ऑफ द डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी देयर इज अ स्वॉर्ड हैंगिंग ऑन टॉप ऑफ आवर हेड इफ वी वर्क इन दिस हॉस्पिटल, कि इफ वी डोंट मीट द टारगेट्स वी वोंट गेट पेड आवर इंसेंटिव इज हाईली वेरिएबल, if we do meet the targets then we are happy, we are taking home far more than what we otherwise would on our own, right? पेशेंट के लिए प्रॉब्लम है, पेशेंट के लिए प्रॉब्लम है ऑब्वियसली कि वो अपनी पॉकेट से ज़्यादा पैसे दे रहा है, शायद अननेसेसरी ट्रीटमेंट उसके बॉडी पे लगाया जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट करना चाहेगी, जो ऑब्वियसली ना तो पेशेंट के लिए हैप्पी न्यूज़ है, ना ही फ्यूचर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एबिलिटी टू कीप रिन्यूइंग दैट पॉलिसी के लिए हैप्पी न्यूज़ है। इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहती कि एलिवेटेड ट्रीटमेंट कॉस्ट्स बिल में डाली जाएं। गवर्नमेंट के लिए भी ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के लिए हेल्थ ऑलवेज बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। गवर्नमेंट विल ऑल्सो नॉट लाइक हॉस्पिटल चेन्स with medical capabilities spiraling up the price of the treatment, right? This is a massive pain point for all 4 stakeholders involved. Doctors, sword hanging on the head via elevated incentives, patients, insurance company, government. इसका solution जो अभी तक चल रहा है वो sustainable नहीं है, which is, ठीक है, insurance company पे load up कर दो claim, डॉक्टर पे इंसेंटिव लोड अप कर दो, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। इसको सॉल्व कुछ हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स नहीं कर रहे हैं। दिस इज वेयर द चॉइस ऑफ विच बिजनेस मॉडल यू शुड पिक अप स्टार्ट्स कमिंग थ्रू। नारायणा इज वन इन आवर व्यू जो इसको काफी इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व कर रहा है। सो लेट मी गिव यू सम मेट्रिक्स। FY24 जो फुली रिपोर्टेड लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, FY24 में if I add up the average of as big tier large hospital chains का representation, let's say from the listed universe, compare it with Narayana, average revenue per patient, Narayana 1.7 lakhs, competition 2.5 lakhs. Okay, ऐसा नहीं है कि नारायणा ज़्यादा सस्ती वाले या OPD ज़्यादा करता है, OPD टू IPD शेयर भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। इनफैक्ट नारायणा में OPD शेयर थोड़ा कम है। 1.7 lakhs नारायणा, 2.5 lakhs पर पेशेंट एवरेज रेवेन्यू फॉर द कंपटीशन। एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड विच इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दिस पहला वाला मेट्रिक। नारायणा 40,000, competition 63,000. These are reported numbers, right? ऑपरेटिंग कॉस्ट पर बेड, रिमेंबर ऐसा नहीं है कि नारायणा में रोबोटिक सर्जरीज कम होती हैं, इनफैक्ट काफ़ी हद तक ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू मैनी ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर बेड नारायणा फॉर द फुल ईयर 60 lakhs, competition 1.2 lakhs, 1.2 crores, 122 lakhs, right? Interestingly, despite lower revenue per bed, much lower operating cost per bed, Narayana return on invested capital 30%, competition 25%. ये FY24 के reported numbers हैं। So ये काफ़ी interesting है, इस business ने कैसे इस pain point को address किया है, where your operating costs per bed are half, your revenues are 30 to 40% lower. How have they addressed it? First and foremost, there is a tech solution. The tech solution is oriented to deliver more IPD inpatient treatments, less OPD for a specific doctor. If you are a high-end doctor, Narayana's tech solution tries to get the doctor spend more time inside the operation theater than follow-ups, OPD, lead generation OPD, well, pre-treatment OPD कह लो। जब हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिटेड होता है तो डॉक्टर राउंड लगाता है, राउंड, राइट?
कल ऑपरेशन हो गया, आज डॉक्टर सुबह राउंड पे आएगा, शाम को राउंड पे आएगा, राइट? दैट इज ऑल्सो टाइम स्पेंट बाय एन एक्सपर्ट डॉक्टर. What the tech solution does for Narayana is, it says, look, पहली बात तो admin processes को इतना कम करते हैं कि turnover of patient बढ़ाएं. डिस्चार्ज जल्दी कीजिए, एडमिट जल्दी कीजिए, ताकि ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट थोड़ा जल्दी जल्दी घुस के बाहर निकले. फॉलोअप्स जल्दी डिस्चार्ज के बाद जूनियर डॉक्टर करे जब तक सीनियर की ज़रूरत ना हो. बट वो जूनियर कब करेगा? ये फंजिबिलिटी अक्रॉस जूनियर टू सीनियर इन द सेम टीम विल हैपन इफ देयर इज अ प्लेटफॉर्म, अ टेक प्लेटफॉर्म वेयर हिस्ट्री, ट्रीटमेंट गिवन, diagnostic parameters, medication taken, everything is getting recorded so that ट्रीटमेंट चाहे सीनियर ने किया था, फॉलोअप चाहे जूनियर कर रहा है, या राउंड पे चाहे जूनियर आ रहा है, डेटा सबको फंजिबली ईजिली अवेलेबल है. पेशेंट जब फॉलोअप पे आ रहा है तो डॉक्टर फिर से रिकलेक्ट नहीं कर रहा, अच्छा आपको हुआ क्या था, ट्रीटमेंट आपका हुआ क्यों था, प्रॉब्लम क्या थी, फिर पिछले हफ्ते क्या सिम्टम थे. एवरीथिंग इज देयर ऑन द system. Information flow is smooth, right? There are many other such pieces, I'll come to it in a minute. Net, here are two very interesting parameters as an outcome. A typical doctor in Narayana does 3 times more complex surgeries in a month than a typical doctor amongst these peer group hospitals, right? इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है, आप डॉक्टर को कॉम्पिटिटिव सैलरी इंसेंटिव तो देंगे. पहली बात तो नारायणा में इट इज़ मोर फिक्स्ड रादर दैन टारगेट बेस्ड. सो इंसेंटिव डॉक्टर को मिलेगा. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर विल बी विलिंग टू रन ऑन हाफ द टेक होम पैकेज कंपेयर्ड टू समवेयर एल्स. बट ऑन दैट इंसेंटिव you are getting a higher asset turn, asset being the doctor and his team in this case. Why are you getting a higher turn? Number of complex surgeries always will give you more revenue, more profits than number of OPD visits for the same doctor of the same qualification, right? The second parameter is very interestingly, so within Delhi there is a Narayana ka hospital called Dharamshila. Now ये धर्मशिला का केस स्टडी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज सेम सिटी है, सेम सिटी में सेम पेशेंट्स हैं, प्रॉबेबली रिक्रूटमेंट ऑफ द डॉक्टर्स ऑल्सो हैपन फ्रॉम द सेम पूल जहाँ पे पीयर ग्रुप एग्जिस्ट करता है. बिफोर द टेक सॉल्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड, धर्मशिला का एक डॉक्टर ऑन एवरेज, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द surgeries, one of the specialities where a particular doctor gave me the count. Before the tech solution in 2018 got implemented, 80 OPDs a day ये डॉक्टर करता था. Could be follow-ups, could be pre-treatment, etc. After the tech solution, today the same doctor does 30 to 35 OPDs in a day. Why? Because a lot gets delegated to the juniors, a lot gets done even remotely. Right? If information is available, the tech system actually allows you to also send messages back to the patient rather than the patient necessarily visiting you for every small thing. Right? This piece is a massive asset turnover generating piece for Narayana. Now, ये तो हो गया पहला part tech का. The second piece that Narayana does beautifully is, if you ever visit their facility, आपको बड़े बड़े बोर्ड दिखेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट या किसी और कॉम्प्लेक्स सर्जरी के डिपार्टमेंट में, CSR फ्रॉम दिस लार्ज company, could be PSU, could be private. This massive NGO has funded this whole unit. And on a case-by-case basis, what we have heard from our primary data checks, Narayana can get access to, let's say, a CM fund, Chief Minister's fund, far more easily than somebody else. Right? Now, what does this do? Obviously, you can do a 10 lakh ki surgery in 2, 3, 4 lakhs because it's heavily subsidized. And Narayana, its doctors and its admin staff
They are empowered and cultural cultural piece set in to pass on all such benefits to customers. Rather than living with a massive fat margin, every time you derive an operating efficiency or a funding discount or a asset turn related higher revenue per bed, per doctor, rather than retaining that profit, they pass it on. That's why the price per patient charged, price per bed charge, etc. is low, right? So this is the piece from where the discounts start in a way flowing through to the customer. Now, what does this do? All stakeholders are happy. Patient is happy. Insurance companies are happy. There's some insurance companies that we've spoken to जो काफ़ी clearly बोलते हैं Narayana is an ethical, good quality business that we have worked with. मैं अगर अपने family में किसी को treatment दिलाना चाहूँ, I would always send them to Narayana. This kind of a feedback coming back from a health insurance company provider becomes a massive way for us to understand the moat that this business has created vis-a-vis competition. Government risk reduces if, जैसे pre-June election result, there was a lot of talk around government coming with hammer and tongs around pricing in the hospital industry. If that kind of a risk were to ever play out, Narayana will be less affected than some of its competitors, given the kind of prices it charges. Now, the final piece, ये वाले पूरे cycle को घुमाना भी है. Profit ज़्यादा आ गया, return on capital employed, as I said, for Narayana is 30%, higher than that for competition, because of a moat, whether it be tech-oriented, NGO paisa, CM fund access, or asset turn, sweating of the assets harder. The moat is deep, return on capital employed is high. Where do you reinvest this? So there are three very clear areas where this company is reinvesting. All feed into the capital allocation framework that I talked about in the previous slide. पहली चीज कहाँ पे reinvest कर रहे हैं? Building the tech capabilities in-house. Right now, it's quite interesting. Off-the-shelf tech solutions for hospitals that integrate data collection on the patient, workflow management and communication with doctors and paramedics, data input from paramedics, communication with pharmacy diagnostics, and analysis of the entire data by the unit head to see कहाँ पे हमारी inefficiencies है, कहाँ पे red flags हैं, कहाँ पे dashboard में ups and downs चल रहा है. This kind of a piece, in a way, ERP, Enterprise Resource Planning Software, you'll find ERPs readily available off the shelf from larger software companies for many industries. इंडिया में हॉस्पिटल्स के लिए है नहीं readily available off the shelf. Hence, peer group might have a fraction of what Narayana has built. Nobody has got the integration of all of these pieces together in a single tech stack, because that has to be built on your own. Narayana hired about 200 Google के employees somewhere in 2017-18. They built all of this stack on their own subsequently in the next 3, 4, 5 years. A lot of it is yet to be fully implemented, right? So if you go to, let's say, एक example के तौर पे बताता हूँ, if you go to a Fortis hospital in North India, अभी भी वो फाइल पे लिख रहे होते हैं. नर्स फाइल पे लिखती है, डॉक्टर फाइल पे लिखता है क्या दवाई देनी है, नर्स साइन करती है ये दवाई दे दी, ये पैरामीटर्स बन के आए, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आती है तो पेपर की तरह पीछे वो 2 पंच करके फाइल में चढ़ाया जाता है. दैट इज द प्रैक्टिस इन फोर्टिस. इन मैक्स इफ यू गो तो लैपटॉप पे आ गया है, एज इन पैरामेडिक मेकिंग एन एंट्री और रिव्यूइंग, और डॉक्टर ऑन द राउंड्स रिव्यूइंग व्हाट द पेशेंट इज गोइंग थ्रू हैज कम ऑन द लैपटॉप मूव्स अराउंड. उससे कम से कम डॉक्यूमेंटेशन हैज बिकम डिजिटल, थोड़ा एफिशिएंसी उससे निकलता है. एट नारायणा this is all getting integrated with all functions. So information from nurse to pharmacy doesn't go via phone call. iPads हैं, पहले बात तो laptop नहीं है, iPad है which is a little more mobile,
but more importantly, unki adoption to get integrated into the rest of the system is significant. It links with pharmacy, diagnostics, admin, but also links with the entire patient history, right? A doctor has access to this readily. अगर उसको सुबह 6 बजे उठ के देखना है आज मेरे कौन से पेशेंट किन राउंड्स पे जाएं, तो that becomes pretty convenient. So building it in-house. Second part is the new beds that are coming up for Narayana, they are far more IBD oriented. So इनका hospital expansion चल रहा है अगले 2-3 साल. Every room can become robotic surgery oriented. Every OT, operation theatre, can become robotic surgery oriented. Every room can be converted into ICU. And hence, again, the same thought process that we want to sweat the asset harder for complex surgeries rather than OPDs, right? And the final piece is they are setting up their own clinics to get the patient in from closer to the home of the patient rather than the patient walking over to the hospital. So, Apollo ने जिस तरह से clinics लगाए, Apollo ने pharmacy लगाई, Apollo ने diagnostics लगाया, Narayana is doing the same, but in an integrated way. Information gets flowed through, exchanged pretty smoothly, and अब खुद का insurance का license भी ले लिया है in a record time, which again talks about how they are good at managing the ecosystem. Competition is far behind, right? Now, this is where an example of moat, capital allocation, giving you visibility कि ये अगले 2-3-4 साल की सिर्फ story शायद नहीं है. The earnings growth might actually continue for a much longer period of time. How do we get understanding of all of this? All right, these are on the right hand side are the financial outcomes. It's a stock actually trading at only 29 times next year forward price to earnings, much cheaper than competition, with moats from a long-term perspective much higher. Just that in the near term, other companies are giving a better bed guidance, etc. Share prices are pumped up. You can actually make a very interesting choice between which hospitals to buy. A lot of running around on the streets is the way to understand this. That's been our strength. Whether it be meeting people who have helped build Narayana's tech. So first couple of quotes are from people who were part of the tech team at some point in the past. How was Narayana's tech built? Whether it be meeting doctors who have been part of higher turnover, number of surgeries being 3 times the norm, same incentives, but all benefits passed on to the customers, clearly giving you examples of how that has happened. Health insurance providers, as I was saying, talking about how well they regard Narayana versus the others. Whether it be meeting people who can help you understand Narayana's capital allocation even outside of India. A lot of running around on the streets is the bottom-up approach to figuring this out. End of the day, you need a business which gives you conviction why return on capital employed will stay reasonably high and why the reinvestment of that capital will happen in a manner that will keep giving you incremental capital employed by high return on capital and hence the growth engine of profit. So that was an example, I thought. If there's questions now or later, happy to take them. Thank you. Maybe 2 questions. One is, since you gave the case study of a healthcare service provider, last 3 years we have seen many hospitals coming up with IPOs. I mean, it could be maybe upwards of 25 or 30. Yeah. I mean, my question is, as a sector, do you have any specific view to this sector over the next 24 months? Right. So first and foremost, the core demand is not affected by things like consumption slowdown, Donald Trump, elections, budget, right? So there's a resilience to the end demand. If you see the value and volume of health insurance policies issued in the last 10 years,
state by state, IRDA website data, very consistent at around 20% plus minus a couple of percentage points, right? So the sector is in an under-penetrated state today, with penetration levels increasing at a very consistent pace. So that's the external environment. Capital cycles need to be very cognizant of, right? Because this is a capital-heavy sector. In the same Bangalore, there is a Manipal coming. In the same Bangalore, there will be other large conglomerates expanding. Everybody is putting beds. Once you put the bed, if you can't get the patient, then there will be a massive drag. Pricing will be crushed to fill that capacity, price wars, etc. That's the typical capital cycle play. But this being the business where already their prices are much lower than others, this being a business where people come here more for the name of the brand rather than the doctor, more for the quality of the treatment rather than the mere price, more for the experience with the insurance providers not rejecting your claim rather than which insurance company is offering you what kind of a tie-up with what kind of a hospital service, etc. There then becomes a little bit of a downside protection from the moat, even in a capital upcycle. But the biggest risk here actually is massive capital has flooded into this sector. Too many beds are coming. If we don't see Narayana's beds getting filled up with high quality patients, high quality in terms of the return on capital, then we should be worried. At the moment, we don't see that worry for Bangalore specifically and Kolkata. Sure. Second question, unrelated. Since you've been researching on many aspects, is there any data that you can share where you see promoter CEO companies' performance versus professional manager CEO companies? Do we have any data over the last 20, 30 years for India specifically? Yeah, so data points are available, but I would say it's not black or white. So the way Pankaj in the morning showed the likes of Titan and all. Now Titan is not a promoter-run organization really, right? The CEOs, the decision makers have been always professionals, but there has been a continuity to that decision making. At the same time, a firm like Narayana, where the key decision makers are all part of the family, it gives you a different skin in the game benefit. There's also negative to promoters always giving their sons the decision making. The sons might or might not be fully capable, right? And there can be a massive risk to even professionals doing the decision making because the professionals don't have their skin in the game. So it's not black or white, but what you need to be, this is where incentive structures for the key decision makers, their incentive alignment with the minority shareholders, their approach towards capital allocation, whether they are trying to destroy minority shareholders progressively or not, it comes into play. There are many promoters who are fraudsters, so that is not a defense. And there are many professionals who are fatigued. They are also not a defense. Thank you. Yeah. Thank you, Rakshit, for a fantastic case study, as always. I have one question. Is over last quarter, I think it is related to the portfolio construct that we have in consistent compounders. We have, trimmed down positions in some stocks, let's like HDFC Bank, Trent. Is that a construct of, and then we have taken entries in, let's say, some stocks like iShare and CMS Info. So is that an example of, enterprising asset allocation? Large part of it, yes. Large part of it, okay. Yes. In fact, not just the last 3 months, last 12 months of churn largely has been allocated. Last 3 months, the churn is actually now reduced, and you should expect lower churn going forward. I'm just looking at last quarter. That's what is coming out. And some of it is exits are because of the valuations like Trent and Titan. Trent was a risk control, certainly, because if we kept holding on to it untouched, it would have by now become 20% of the portfolio. Okay. So we will keep trimming if the allocation goes beyond a point, which is what we've done. More recently, with the way all the quick commerce, etc., is growing, that takes away
a large part of the prospective benefits from Star Bazaar if that risk plays out. So we are being conscious of that. So there are those kinds of examples which are risks, not necessarily valuation, but allocation, risks related to maybe disruption in future. And then there are also valuation related examples. So Pidilite, Titan, we've trimmed those because of the higher valuation, and at the margin, home building materials undergoing a moderation, lab grown diamonds a risk. So Sure, makes sense. Thank you very much.